आपका स्वागत है इस शो फूड एज मेडिसिन पे, जहां हम बात करेंगे अबाउट द पावर ऑफ फूड एंड हाउ टू लीड अ हेल्दी एंड डिजीज फ्री लाइफ। काम किया है। बीमारियों से लड़ने की उनकी अप्रोच के चलते उन्होंने अमेरिकन मेडिकल कम्युनिटी में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। हेलो मोना एंड वेलकम टू द शो। Thanks, Pavleen. Nice to be here. सो फॉर स्टार्टर्स हमें सबसे पहले फंक्शनल न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बताइए। Pavleen, functional medicine is a systems approach for addressing the underlying cause of disease. A functional medicine practitioner is a super generalist, not a super specialist, because they believe that all the organs in your body are connected. You want to treat the body as a whole, not as sum of parts. For example, we believe that the brain and the gut is connected. So we will treat the whole body in order to treat the gut. Okay. We take into account genetic, lifestyle, environmental factors, not just the disease condition that the person is experiencing to make a treatment plan. It is what we call precision medicine, the ultimate personalized medicine that you could get. Okay. तो मोना आज हम बात करेंगे ऐसी एक मेडिकल कंडीशन की which is killing us sweetly, if you know what I mean. Yes, pre-diabetes. तो मोना टेक्निकली स्पीकिंग ये प्री डायबिटीज कंडीशन है क्या और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? Pre-diabetes is a condition जहाँ पे आपका insulin level rise हो जाता है. Most often people don't even check for it. People check the glucose levels, they're fine, they're okay. But in most cases, insulin levels will start rising a few months to even a few years before the blood glucose will even show any difference. Wow, okay. So early intervention से, early detection से हम लोग type 2 diabetes को 100% prevent कर सकते हैं. Okay. Prevention is 100% possible with diet and lifestyle changes. मोना आपकी पॉजिटिविटी सच में कंटेजियस है। तो आइए पता करते हैं कि इस एपिसोड में और हम किस किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। इन दिस एपिसोड मोना बताएंगी हमें कि प्री डायबिटीज के लिए सही डाइट क्या है, बाहर जाके भी कैसे ऑर्डर करना चाहिए हेल्दी खाना, और कुछ यमी रेसिपीज जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी। प्री डायबिटीज के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता लगेगा कि कोई प्री डायबिटिक है? There are no physical signs or symptoms of prediabetes. Okay. It's 100% pure diagnostic through blood. There are a lot of times जब लोग कहते हैं कि ये बहुत पतला है तो इसको डायबिटीज नहीं हो सकती है. Right. Even that is 100% false. A lot of thin people can get diabetes too. Really? There's a term that we have which we call TOFI. TOFI is thin from the outside and fat from the inside. These people, I call them walking time bombs because the fat deposition is not on the midsection. It is usually around the organs of the body. And the fat keeps growing around the organs of the body and actually chokes them. So you need to get yourself checked up regularly, and the emphasis should be laid on checking on the right markers. तो मोना प्री डायबिटीज का मूल कारण क्या है? So pre-diabetes के अंदर the major reasons are poor diet control, environmental factors, toxins in your environment, they could be exogenous or endogenous, or genetics. So like everybody says कि अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो मुझे तो 100% डायबिटीज होगी. Is that true or you're about to bust that myth also? The biggest myth out there, because the genetic expression can be turned off or on with diet and lifestyle changes. And वो कैसे किया जाता है? हम ये प्रोसेस रिवर्स कैसे करें? The first thing that you have to do is start eating clean.
You should know where your food is coming from. I know that that's very difficult in this day and age living here. Hopefully, if you can grow your own plants and vegetables, would be a good idea. The other thing is to avoid environmental toxins and avoid BPA, avoid plastics. Do not use plastic containers for heating, for drinking hot tea, for using in your microwaves. Avoiding GMO foods. और हम अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप थोड़ा स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि वो रिवर्स हो जाए प्रोसेस? So it is imperative that from the beginning you avoid sweets and refined carbohydrates. Okay. Because those are the things that lead to spike in your blood sugar. The more your blood sugar spikes, the more your insulin will get resistant. So how do we prevent that? By eating whole fruits and vegetables, non-processed foods. The fruits and vegetables, especially that you eat, should be low glycemic index. Those are the ones that are your cruciferous vegetables. Aapki gobi, band gobi, kant gobi, green leafy vegetables, sab tarah ke saag, lentils. These are all the foods that do not spike your blood sugar too much because they're high in fiber. ओके तो आपने वहाँ बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जो मुझे समझ नहीं आए हैं. तो दैट्स व्हाई फॉर अ ले पर्सन लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो कैसे क्लासिफाई करेंगे हम फूड कैटेगरीज में? So low glycemic index foods are the ones that do not spike your blood sugar. अच्छा. Okay. That is, उनका sugar content कम होता है, उनका carbohydrate content कम होता है. For example, gobi or potato. The two vegetables, but gobi ka glycemic index is much lower than that of a potato. So the blood sugar would respond very differently to a potato versus a cauliflower. Okay. For a potato, the spike is humongous. For a cauliflower, because one, it is low in sugar, low in carbohydrate, and high in fiber, the blood sugar response is slow. Okay. हाउ डू वी फाइंड आउट कि कौन से फूड्स में लो जीआई है, हाई जीआई है, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग अप द इंटरनेट? सो द रूल ऑफ द थंब इज, अगर कोई फ्रूट या वेजिटेबल बहुत स्वीट है तो जनरली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा. अगर उस फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर ज़्यादा फाइबर है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, बिकॉज फाइबर काउंटरैक्ट्स द शुगर. ओके. जैसे कि मोना आपने कहा कि हमें अपनी डाइट में प्री डायबिटिक्स को कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए, बट इंडियंस के लिए ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. हमारे तो हर मील में वी आर ईदर अबाउट रोटी और चावल और पराठा. हाउ डू वी रिड्यूस द कार्ब्स? सो द मैजिक हैपेंस व्हेन यू लर्न द आर्ट ऑफ स्टैकिंग. ओके. दैट इज पेयरिंग योर फूड्स प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चावल खा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव वेजिटेबल्स which will add fiber, which will prevent your blood sugars from spiking. Okay. Have some protein, which will again prevent the spikes in the sugar. And fat is the third thing that prevents the spike. So fat is already there in your food. You cook food in some kind of a fat. So instead of having just dal and chawal, add a vegetable to it. Okay. And try and add some kind of a protein to your meal. It could be in the form of tofu for vegetarians, in the form of some kind of a chicken, meat, fish, anything that you like. How do we avoid sweet in our diet? You should not avoid sweet in your diet. Moderation here is the key. Keep it as an occasional treat for yourself, Okay. not as a daily intake. So do not make it as a habit. According to research, it takes about 14 days of complete abstinence from a particular food for the cravings to die down substantially. Okay. तो मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती थी, विच इज़ वेरी प्रेवलेंट नाउ, और हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स एवरीबडी इज यूजिंग इट. दे थिंक इट्स ओके. आर आर्टिफिशियल स्वीटनेस. हाउ गुड आर दे? हाउ बैड आर दे? आर अ गुड सब्स्टिट्यूट और नॉट? I think artificial sweeteners, in my opinion, are poison. You should absolutely stay away from them. Not only do they lead to a bunch of disease conditions themselves, a lot of people are reactive to them. They also are one of the biggest endocrine disruptors. Okay. So when you ingest artificial sweeteners,
they go and attack our gut microbiome. Our gut houses about 100 trillion bugs. Wow, okay, that's a lot. That's a lot, yes. And artificial sweeteners, along with, of course, other things, cause these bugs to die. Okay, that's the good bugs. The good bugs die, and that leads to inflammation. So pre-diabetic or not, one should not have artificial sweeteners. Absolutely, nobody should have artificial sweeteners. Pre-diabetics के लिए natural sweeteners कोई options हैं जो वो डाल सकते हैं instead of sugar? They can use dates, which are sweet enough. They can use coconut sugar. And if they want to use a non-calorie sweetener, stevia is a safe option. Okay, all right. Is it derived from, is it natural? It is derived from a plant. It's from a plant, so it's safe. Yes. तो मोना फूड के अलावा ऐसे और कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो एक प्री डायबिटिक को करने चाहिए टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज? Exercise is really important. A person should strive for about 30 minutes of exercise per day. Maintaining a stress-free life is also very important. Stress contributes heavily towards diabetes or any other disease condition. So doing some yoga, meditation, two excellent choices when it comes to stress reduction. I think कि लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि स्ट्रेस कितना बड़ा फैक्टर है, पर जैसे कि आपने कहा कि ये हर लाइफस्टाइल डिजीज में एक फैक्टर है स्ट्रेस. Absolutely, 100%. इसके साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. Stay tuned with us with more nutritional information on the other side of this break.